तो हम ट्रांसफार्मर टर्न रेशो ईजिली बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम ट्रांसफार्मर टर्न रेशो निकाल सकते हैं। ओके जी, सो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको ट्रांसफार्मर टर्न रेशो के बारे में जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर होती जा रही होंगी। अब हम चलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की तरफ। सो सिंपल, और हम इसको प्रूफ भी करेंगे। करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ओके जी। तो प्रूफ करने से पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, द रेशो बिटवीन primary current and secondary current of secondary winding is known as current transformation ratio। ओके जी, मैथमेटिकली सो mathematically it can be expressed as I1 divided by I2 is equal to I primary current produced in the primary winding of the transformer and the current produced in the secondary winding of the transformer। ओके जी, तो अब हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। That how primary current divided by secondary current is equal to number of turns of secondary divided by number of turns of primary। ओके जी, अच्छा, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें एक और लॉ से हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको कहते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ। तो इन नियर फ्यूचर एक कंप्लीट सीरीज़, एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूं और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब तक के लिए अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि ताकि हम अपने इस फार्मूला को प्रूफ कर सकें कि एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ओके जी, सो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ, the magnetic flux intensity, okay जी, along a closed path is equal to the current I enclosed by that path। ओके जी, मीन्स अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे करंट फ्लो हो रहा है
तो इसके जो सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा वो इस चीज़ के इक्वल होगा। ओके जी, ओके जी। सो क्लोज्ड इंटीग्रल magnetic flux intensity dl is equal to I enclosed। ओके जी। So this is the current, magnetic flux density or magnetic flux intensity। okay जी। Now we can write it as in simple form in the transformer। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो उन वाइंडिंग्स के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो इट इज़ इक्वल टू करंट आई, और करंट किससे फ्लो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग से। ओके जी। और ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, दिस इज नोन एज एच, एंड डी एल इज इक्वल टू एल सी। हाउ, एच इज इक्वल टू एच सी एंड डी एल इज इक्वल टू एल सी, वेयर सी is the core of the transformer। because magnetic flux density और magnetic flux जो है वो कोर के अंदर फ्लो करता है। सो दिस इज नोन एज एच सी, एंड कोर की एक अपनी एक लेंथ होगी, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एल सी से। ओके जी। सो वी कैन राइट इट एज, दिस इज द इक्वेशन ए। इस इक्वेशन से हेल्प लेते हुए हमने ये इक्वेशन डिराइव की। जस्ट क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी एच को हमने रिप्लेस कर दिया एच सी से, एंड सी इज़ द कोर, एंड लेंथ जो थी डी एल, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एल सी से, एंड जो करंट था आई इनक्लोज्ड मीन्स कि जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से जो करंट फ्लो हो रहा है multiply by the current। okay, so this is the equation number 1। okay ji, as we know that magnetic flux density B is equal to mu H, where this is the magnetic flux density, this is the permeability, and this is the intensity, magnetic flux intensity। okay, magnetic flux density and magnetic flux intensity। okay ji। so we replace B is equal to BC, okay ji, and mu is equal to mu C, and H is equal to HC। this is the equation number 2। so equation 2 becomes BC is equal to mu C HC, or HC is equal to BC divided by mu C। okay, so now according to equation 1, BC divided by mu C is equal to IN, and we know that in transformer we have two types of windings,
primary winding and secondary winding. So BC is equal to mu C I1 N1 for primary and I2 N2 for secondary, because this both ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. तो जब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होता है ड्यू टू वन वोल्टेज अप्लाइड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. ओके, तो करंट फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, और उसके बाद यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, एंड विच कॉजेज इलेक्ट्रो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो हमारे पास मिलती है E2 से. तो जब हमारे पास ईएमएफ जनरेट होती है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, तो यही ईएमएफ जनरेट करता है हमारे पास करंट I2. ओके, सो एंड this is the LC, length of the core length. Okay जी. Also we know that magnetic flux phi जो है is equal to B dot A. So phi is equal to phi C, B is equal to BC, and A is equal to AC. We replace them. So phi C is equal to BC dot AC, और BC is equal to phi C divided by AC. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. नाउ पुटिंग इक्वेशन 5 in equation 4, वी गेट BC की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो phi C डिवाइडेड बाय AC म्यू C LC I1 N1 माइनस I2 N2. ओके जी. अब जैसे कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारे पास होती थी रेजिस्टेंस, इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर हमारे पास होती है रिलेक्टेंस. ओके जी. एंड वी नो दैट reluctance, the opposition offered to the flow of magnetic flux in the magnetic circuit is known as reluctance. So जैसा कि रेजिस्टेंस था R इज इक्वल टू रो L ओवर A, इसी तरह रिलेक्टेंस जो है S वो इज इक्वल टू होती है LC बटा म्यू C ओवर AC, और C इज इक्वल टू LC म्यू C AC. ओके जी. जब हम मैग्नेटिक सर्किट्स को डिटेल से इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, तो उसी के अंदर हम रिलेक्टेंस और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स सब चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ओके जी. सो हमारे पास जो रिलेक्टेंस थी, चलिए इसकी मैं यूनिट भी आपको बता देता हूँ. यूनिट जो है, द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज एम्पेयरटेंस पर वेबर. ओके जी. एम्पेयरटेंस पर वेबर ये यूनिट हो गई. सो अगर हम इस चीज़ को चेकआउट करने की कोशिश करें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. सो वी कैन ईजिली नाउ according to equation 6,
ओके जी, अब इसी चीज़ इक्वेशन 6 को हम चीज़ों को थोड़ा मिक्सअप कर लें। ए सी म्यू सी और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को बाहर निकाल दें। सो I1N1 minus I2N2. So we can replace this formula by the quantity RC. So putting equation B in equation 7 we get ओके जी। तो इसकी जगह पे आ जाएगा RC और ये आ गया 5C और यहाँ पे क्या आ गया I1N1 फॉर प्राइमरी साइड of the transformer and this is known for secondary side of the transformer. Okay जी। अच्छा, as we know that in transformer is 99.9%, its efficiency of the transformer is 99.9%, or we can say that the reluctance is very low. So since reluctance of the transformer is too low, so we can put RC is equal to 0 because the efficiency of the transformer, or in other words the ideal transformer, is 100%. It means that there is no opposition offered by the magnetic core to the magnetic flux. So the value of RC is equal to 0. So putting the value of RC in equation C, we get 0 multiplied by 5C is equal to I1 N1 minus I2 N2. ओके जी। तो ये हो गया 0 I1N1 माइनस I2N2 रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे चीज़ माइनस हो रही है, इक्वेशन की साइड पाएगी तो प्लस I2N2 इज इक्वल टू I1N1 और I1N1 इज इक्वल टू I2N2. So I1 divided by I2 is equal to N2 divided by N1, or I primary divided by I secondary is equal to N secondary divided by N primary. Okay जी, hence proved. So I1 divided by I2 is equal to N2 divided by N1 is equal to 1 over A. ओके जी। और I1 divided by I2 is equal to 1 over A. So this is known as current transformation ratio. So this is known as current ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर को सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हों और उनके अंदर जो चीज़ें हमारे पास गिवन हों, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम इजीली करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो रही है कि
कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो थी इज इक्वल टू ए। ओके, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू ए, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू ए। अब ऊपर प्राइमरी करंट है और नीचे सेकेंडरी करंट है, सो ए जो है इन्वर्स हो जाएगा, ए जो होगा वो आ जाएगा 1/a, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज नोमिनेटर में है और प्राइमरी वोल्टेज डिनोमिनेटर में है, सो इज इक्वल टू ए, and here secondary current is in denominator and primary current is in nominator, so यहाँ पे जो है ये डिवाइड हो जाएगा 1 divided by a। okay, so this is the current transformation ratio। अब जो है लास्ट वो था टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो कि यही है टर्न रेशो ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके जी, ओके। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके जी, तो अब हम इन सब चीज़ों को अगर एक ही फार्मूला के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सो secondary voltage divided by primary voltage is equal to secondary number of turns of the secondary winding and primary number of turns of the primary winding is equal to primary current divided by secondary current। okay, और secondary voltage, primary voltage, secondary EMF, primary EMF, secondary number of turns, primary number of turns, सॉरी ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी, अगर हम इनको इस चीज़ से डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, इज इक्वल टू ए, और सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट इज इक्वल टू ए। ओके, अब अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ 1/a ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो को लिखने की कोशिश करें तो वो कैसे लिखेंगे? प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी ईएमएफ डिवाइडेड बाय सेकेंडरी ईएमएफ is equal to primary number of turns divided by secondary number of turns। okay, primary current divided by secondary current is equal to 1/a। okay, or primary voltage divided by secondary voltage, primary EMF over secondary EMF, primary
number of turns divided by secondary number of turns is equal to primary current divided by secondary current is equal to 1 over A. ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।